Assalamu alaikum and hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great and learning English perfectly. I welcome all of you to this channel Everyday English with Amna. My name is Amna. Today's video is very important and knowledgeable. तो आज की वीडियो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना because you will learn how to use the correct grammar in IELTS speaking and writing as well. आज टेंसेस की टेंशन खत्म होने वाली है कि कौन सा टेंस यूज करें स्पीकिंग में राइटिंग में समझ नहीं आता. So today you will learn the main grammatical tenses you can use to ace your IELTS speaking and writing test. और स्पीकिंग टेस्ट का ओवरव्यू भी रहेगा इसमें ताकि साथ साथ समझ में आता रहे कि कैसे यूज करने हैं sentences easily. So let's get started. Here is the content of the video. First of all, the biggest question that always confuses us that which tense should I need to use for writing and speaking. And in this video you will get to know how to use present, past and future tenses easily with top tips to boost your score. And in this video you will also get to know the overview of the IELTS speaking test के section 1, 2, 3 में ज़्यादातर कौन से टेंसेस यूज़ कर सकते हैं. चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वाज वंडरिंग द मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर ओनली वाचिंग बट नॉट सब्सक्राइबिंग. इफ यू एंजॉय द कंटेंट आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ you consider subscribing to my channel and do like and share as well. And if you have any question you can ask me in the comment section. And thank you so much for those who always support and give positive feedback. That makes me to make more videos. Now let's get started. Using the correct grammar in speaking and writing is really important if you want to get a high score. And you know, in speaking exam, almost 90% of students make a grammar mistake in their initial responses. जब speaking test के start में ही इतनी सब mistakes हो जाएंगी तो समझ जाएं कि वहाँ से impression ख़राब हो जाएगा और examiner को समझ में आ जाएगा कि आपका क्या level है. Because we don't know how to use the correct form of a verb in a certain situations, हमें समझ में ही नहीं आता. And you know, first impression is the last impression. And if you are making mistakes initially in your speaking exam, then how can you get a high score? That's really important to get to know that. Now let's understand with the help of examples. So here we have the biggest question, which tense should I need to use? Before revealing the answer, here's the tip. बहुत important एक टिप शेयर करूंगी. अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि टेंसेस को किस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे समझना है, which helps you to communicate effectively and also improve your writing skills. टेंसेस का नाम सुन के ही हम टेंशन में आ जाते हैं कि इसको समझना कैसे है, समझ से बाहर है, इसको रहने देते हैं जैसे भी आते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड टेंसेस विद द सिचुएशन. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब जब सिचुएशन को जहन में रख के सेंटेंसेस बनाएंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका क्लियरली पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे यूज़ करना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न ग्रामर डीपली बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ द सिचुएशन. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ग्रामर इज़ नॉट बोरिंग बट हाउ वी लर्न इज़ बोरिंग. प्रेजेंट टाइम में आप जहन में रखें कि क्या सिचुएशन है, पास्ट टाइम में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में. इन सब टेंसेस में कितनी सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें जहन में रखनी है. डोंट वरी, आई विल एलैबोरेट मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू थिंक एंड यूज टेंसेस डिफरेंटली. देन यू कैन easily convey your thoughts and ideas. So here we have the biggest question, which tense should I use in writing exam? The tense we choose for writing totally depend on the purpose and the context. आपको पता हो किस पर्पस में लिख रहे हैं, एग्जाम की सिचुएशन में लिख रहे हैं या फिर हम किसी और को लेटर लिख रहे हैं, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए. It means that in which situation and for what purpose you are using. The present simple is the most commonly used tense in academic writing. That is really important. अगर present tense को अच्छे से भी समझ आते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. If you are writing a narrative or a story और historical background की बात कर रहे हैं तो most commonly used tense is past tense. And if you talk about the speaking, it depends on what you want to convey. I mean to say that in which situation you are talking about and what situation you are talking about. The present situation, if you are talking about the present, talking about the past and the future, so that matter. And here I want to give you a very important tip. If you understand perfectly 4 present tenses, 3 past tenses and only 2 future tenses, these are more than enough to crack the language. Literally most of the questions you can answer easily if you have command on these. So writing को भी और speaking को भी handle करना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा. बस आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि as a situation की तरह इसको understand करना है. Let's look at each of these situations, present, past, future, and explore these tenses you can use. Let's talk about the present time first. When discussing the present, you have a variety of situations like 4 I have already talked about that
These are highly important to crack the language if you fully understand this: present simple, present continue, present perfect simple, and present perfect continuous. Today I will give you only the overview to get the idea. You will get the clear idea that these used to talk about the action or events. I mean, the present simple you can use to talk about your habits, your daily routine, and for simple situation you can use if you are talking about the general truth or habitual actions. For example, I eat breakfast every morning. Or if somebody asks, your examiner specifically asks you, tell me about your daily routine. It is very common question in the IELTS speaking exam. So use only simple tenses. So routine को बताने के लिए sometimes हम past use कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता हम जब बात कर रहे हैं कि हम past को भी बीच में add कर देते हैं. लेकिन अगर अपने अपने daily routine को बताना है तो use only simple present tense. No need to use past. तो अगर continue की बात करें, present continue की, तो it is used to talk about action that are currently happening. It means that you are in the middle of action. वो तो एक सिंपल में तो हमें पता है कि ये एक्शन हमारी रूटीन है, हैबिट्स है, और यहाँ पे जो हमारा यू आर इन द मिडल ऑफ एक्शन, यू आर स्टिल डूइंग समथिंग, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम. तो समझ जाएं कि अगर कोई एक्शन है जो कंटिन्यू है और प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट को जहन में रखना है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को भी आपने जहन में रखना है कि हम इज एम आर यूज करते हैं इसमें इन ऑर्डर टू मेक अ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी यूज करने के लिए बहुत केयरफुल रहना. स्पीकिंग में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिस्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, फादर से रिलेटेड पूछ सकते हैं. तो ऐसे जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि देख सकें कि वर्ब के साथ आप एस और एस का यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर यूजिंग सब्जेक्ट लाइक आई, वो, यू, दे, तो फिर ज़रूरत नहीं है. आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो उसके लिए वर्ब के साथ एस और एस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ लाजिम आपने उसके वर्ब के साथ आपने लाजिम एस और एस यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. अभी अगर फादर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं, माई फादर ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. नेक्स्ट वी हैव अ परफेक्ट सिंपल टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, लाइक इमीडिएट पास्ट. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुछ पास्ट में कुछ चीज स्टार्ट हुई, उसका कनेक्शन अभी तक है. इट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times. अभी सेंटेंस का मतलब है कि ये प्रेजेंट में भी विजिट करके आया और बता रहा ऑलरेडी वो भी 3 times विजिटेड कर चुका है. सो इट मीन्स दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. सो पास्ट से भी कनेक्शन है और जस्ट बीन कंप्लीटेड है. नेक्स्ट सिंपल है जो बिल्कुल कंटिन्यू का मतलब है कि जो स्टिल कंटिन्यू रहता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. अभी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू ही है. सो इट ऑन गोइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 2 hours. ये वो 2 घंटे से सॉकर खेल रहे हैं, अभी तक कंटिन्यू है. कब से स्टार्ट हुआ? 2 घंटे हो गए स्टार्ट हुआ. लेट्स अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 section that you know, the interview and introduction section, most of the time we make lots of mistakes in this section. Here I just want to give a small tip that can instantly boost your score. When the examiner asks you, what is your name? We always answer like, my name is Amna. Next time, try to practice like, my name's Amna. Use contraction in your answer. That will definitely help you. My name's Amna. IELTS का speaking part 1 जो 4 to 5 minute का रहता है, उसमें अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, where do you live now? So how you can answer using different tenses. जो अभी हमने लर्न किए हैं tenses. So present simple हम use कर सकते हैं, I live in Spain, क्योंकि you are talking about present situation. And if you are in the temporary situation, you can use I'm living in Spain at the moment. And if something you are talking about, you focus on the time, I have lived in Spain for 5 years. And if you are focused on activity, you can use I have been living in Spain for 5 years. So have been living, it means that you are focused on activity. So how you can arrange these sentences in a model answer. I am living in Spain now. I actually moved here for work reasons. I have been living here for 5 years and I really enjoy it. It's a great place to live. So you can construct your sentences like this and can add more information accordingly. Here I just want to share a small tip. If you are preparing for the speaking exam, try to make sentences that are true for you, because it will help you to talk more confidently with natural gestures and body language. आज की वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इन टेंसेस पे प्रॉपरली काम कर लिया तो आपका स्पीकिंग का राइटिंग की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. चलिए आगे मूव करते हैं. हम टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम. सो फॉर द पास्ट टाइम यू कैन यूज़ पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू,
continue, past perfect, and used to and would you can also use in order to talk about the past situations. Each of them is used to describe actions or events that occurred in the past. So all you need is to practice. Let's understand past tenses with more examples. This tense is really helpful for your IELTS speaking part 2 section, that is cue card section, and for almost 2 minutes you have to speak. So you can use in order to tell different stories, or if you are asked about the childhood, your last job or previous holiday, you can use it easily. For example, I lived in Manchester when I was. So the past simple describes a completed action in the past. इसका मतलब है जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया. बस आपने केयरफुल रहना है कि वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. If you are making past simple sentences and if you are talking about your past events and stories, you can use past continuous. I was living in Manchester when I met my girlfriend, because past continuous describe an action that was ongoing in the past. अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो पास्ट की या कोई इवेंट बता रहे हो तो आप इजीली पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज कर सकते हो. और ये स्पीकिंग पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि क्यू कार्ड सेक्शन रहता है, तो आपसे कुछ भी इस तरीके से आपके प्रीवियस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है. फर्दर वी हैव अ पास्ट परफेक्ट. वी यूज हैड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनिंग अ रीजन फॉर द पास्ट सिचुएशन. अगर पास्ट के कुछ रीजन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हैड यूज कर सकते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई हैड एक्चुअली मूव टू मैनचेस्टर 2 years before I met my girlfriend. So explaining a reason for the past situation, you can use had with the third form of verb. Next we have used to is used to describe the past habits or state that is no longer true. For example, कोई बचपन में चीज़ें आप करते थे वो अब नहीं करते. I used to eat breakfast every morning but I now skip it. So I used to live in Manchester. I used to eat chocolates but अभी नहीं वो मैं करे. No longer true. So you can use used to in order to describe your past habits जो अब true नहीं है. Next we can use would also in order to describe our past action जो repeated action or habits in the past. For example, I would eat breakfast every morning before work. So इसमें आप इसका मतलब है कि जो पास्ट की आपकी रिपीटेड एक्शन थी उसके लिए भी आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस बना सकते हो. व्हेन आई लिव्ड इन मैनचेस्टर आई वुड कैच द बस एवरी डे टू स्कूल. तो इसका मतलब है कि आप पास्ट की रिपीटेड एक्शन और पास्ट की हैबिट्स के बारे में बता रहे हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पास्ट टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अबाउट पास्ट इवेंट्स. सो ऑल यू नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस. सो हियर वी हैव द मॉडल आंसर टू टॉक अबाउट द पास्ट सिचुएशन. यू कैन आंसर लाइक आई मेट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड अबाउट 10 years ago. I was living in London when I met her in a museum. It was pure luck because I had never been to that museum before. In fact, I never used to go to the museums, but I went to that one to see a painting someone had recommended. You see how you can construct your answer in order to express your story or past event. Now let's understand about the future situation. For future scenarios, you can use future with will, future with going to, and you can also use present continue. Yes, you can also use present continuous in order to talk about your future situations. And further you can use might, may and could. These are the 4 main ways to talk about the future tense in English. Each of them has a slightly different implication. Future with will, if I talk about a simple and common way to talk about the future scenarios or future events, it means that a willingness or intention to do something or a prediction of what will happen based on the present circumstances, that I will go there, so you predict like this. And you can also use a going to with it is quite similar like will, but it talk about if you are talking about that is already a plan or intention in a place to make it happen. Okay, already plan है. will तो हम यूज करते हैं कोई prediction है that what will happen based on the present circumstances, but going to जो already हमारा plan रहता है. And further present continue we can use to talk about the future events, especially when they are already scheduled or arranged. जो already scheduled हैं और arrange हो चुके हैं उसके लिए. This tense is often used to talk about the events that is happening soon, such as I am flying to the Paris tomorrow. So in such situation you can use present continuous. You can also use might, may or could to say that we think something in the present or future is possible but we are not sure. Like surety nahi hai, uncertainty. I might see you tomorrow if you are in the office. There may be another issue that I don't know. So overall, choosing the right tense to talk about the future events depend on the context and the speaker's intention. By understanding these 4 options, these 4 tenses, you can communicate more effectively and accurately when discussing future plans and possibilities. Now understand with the help of more examples. So future tense is quite helpful in your speaking part 3 section, that is discussion part, and in this section the examiner will try to confuse you by asking cross questions. That is really important. अभी यहाँ पे examiner जानबूझ के cross questioning करता है, why वाले questions पूछता है ताकि देख सके कि आप कितनी जल्दी उस पे आंसर देते हो. So बट लेकिन future tense आपको इस तरह के question part 1 speaking के part 1 section में भी आ सकते हैं. For example, if examiner asks you will you change your job in the future,
भी स्टडी और जॉब से रिलेटेड अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो वो ये भी पूछ सकता है, विल यू चेंज योर जॉब इन फ्यूचर? सो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड? आई डोंट थिंक आई विल change my job just yet. It's not a great, but I think I will get better. So we know we can use will in order to make a prediction. But if you are talking about something that is already decided or planned, you can use I'm not going to change my job just yet. So already planned hai. And if planned and scheduled, I'm starting a new job next week. Already scheduled bhi hai or planned bhi hai. So you can use like I'm starting a new job next week. And if there is a possibility, future possibility, you can use I might change my job if I find a better one. So you can use and you can construct your model answer like this. I don't think I will change my job just yet. It's not great, but I think I will get better. In fact, I'm going to ask to take on more responsibilities so I can gain more experience. That might help me get a promotion in the future. So you see how you can use future tense in order to talk about the prediction, schedules, future possibilities as well. So this is the end of the video. I hope you liked it. So don't forget to subscribe to my channel, like, share and comment as well, and best of luck for your exam preparation. Take care. Allah Hafiz.